Hello everyone, welcome to Band-Aid series pronunciation. This is a series where you will get knowledge कि आपके speaking में कैसे scores आ सकते हैं. Your aim is to get 7 plus 7.5 और 8 in speaking. फिर चाहे वो आप IELTS राइट डाउन कर रहे हों, सेल पिप राइट डाउन कर रहे हों, तो सेल पिप के लिए आपको कितने CLB 10 to 12 टारगेट है या CLB 9 टारगेट है, या चाहे आप PT कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर 79 प्लस स्कोर्स, यू नीड टू पे अटेंशन टू pronunciation. Pronunciation is very important. It is 25% marks in IELTS speaking, and सेल पिप also it is approximately 15 to 20%. And even if we talk about PT में तो 0 to 90 पूरा का पूरा एक क्राइटेरिया है, स्कोरिंग क्राइटेरिया है pronunciation का. So we are going to pay attention and focus because बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे, वनीता मैम से, रीत मैम से पूछते हैं कि सर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपनी pronunciation. So this is one rule which we are going to discuss. Today's topic is the rule of STION. Yes, STION अगर किसी word के ending में हो, so how to pronounce those words. Before getting started, here is a brief introduction about your all 9 bands master trainers. Her name is Vanita Handa and she looks for Marvel IELTS. She coaches for Marvel IELTS online as well as offline. My name is Bhrat Sir and I coach for PT, and we are your 999 bands master trainers. This is my scorecard of PT. Why I show my scorecard of PT? The reason being PT में 10 scoring criteria होते हैं, so you get to know that कि आपके बाकी enabling skills में भी, grammar में, fluency में, pronunciation में भी कितने marks आप achieve कर रहे हो. Reading, writing, listening, speaking तो हर एक test में common होता है. Those who are watching this video for the first time, उनके लिए just a bit of information that PT में scores 10 to 90 में होते हैं, and when you score 85 plus in PT, you are awarded 9 bands equivalent score. So I have scored 100% marks PT में, और pronunciation में भी I have scored 100% marks. So what I am going to do is I am going to tell you how I have scored so that you can also attain your score. फिर चाहे वो PT आप write down कर रहे हैं, सेल पेप write down कर रहे हैं, या फिर IELTS. We have discussed the importance of pronunciation, that pronunciation is very important in IELTS. It's 25% of your speaking scores. PT में तो 0 to 90 होती है speaking में, और speaking का score बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी pronunciation पे. Speaking से ही आपके listening के marks आते हैं, reading के marks आते हैं. Those students who are not aware of this fact and planning to write PT, उनके लिए बहुत important information है कि PT में बहुत ज़्यादा marks आपके speaking से ही contribute होते हैं, listening में, speaking से ही contribute होते हैं, reading में. So you have to pay attention कि आपके pronunciation में भी marks आएं, and self-pip में भी speaking में pronunciation is very important. It is 15 to 20% role in your overall scoring. So you have to pay attention to your pronunciation. And one thing what I want to tell is this is pronunciation. बहुत सारे students इसी को ही गलत pronounce करते हैं and they say pronunciation. Always remember spelling में ही NUN है, noun ONUN नहीं है, so it's pronunciation. It's not pronunciation. Okay, so आज का topic है rule of STION. पहले हम normal usage देखते हैं, which is TOIN. TION को हम कैसे बोलते हैं? We speak it like shun. Right, so let's see example. This is an example. यहाँ पे ये word है education and this is UK pronunciation. I will play it and you can listen to this. Education. So it is being said as education. Okay. Education. And now let's move to the second one, which is reception. It is being said as reception. 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 तो what I'm trying to show over here is this, जितने भी आपके TION वाले words हैं, they will be spoken as shun, and यहाँ पे आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं. Position. So this is your Position. Position. So all these words which ends with TION, this is a uniformity. वो सारे आपके words शन में end होते हैं. But what is the rule now? अगर आपका S लगा हुआ है शन से पहले, right? So there is a rule which you need to understand because यही minute mistakes आपके pronunciation के marks deduct कर सकती हैं. फिर चाहे आप PT में हो, सेल पिप में हो या IELTS में हो. So what is the rule? So whenever it is STION, it will not be said as shun. It will be said as चन. विनीता मैम ने जब आपको आइल्स के लेटेस्ट चेंजेस बताए थे, अगर वो वीडियो आपने देखी है तो उसमें ये डिस्कस किया था, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको अभी सजेस्टेड वीडियोस में ऊपर लिंक आ जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का URL दिया हुआ है. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द लेटेस्ट चेंजेस इन आइल्स, यू कैन वॉच दैट वीडियो टुडे. सो लेट्स सी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ STION. सो एक वर्ड है डाइजेस्ट. हम इसको कैसे बोलते हैं? डाइजेशन. बट बोलना कैसे है? Digestion.
If you see, it is said as digestion. So over here it will be STION है तो chan, digestion. Always remember this thing. This will help you to boost your scores, boost your pronunciation scores. PTE में, CELPIP में, IELTS में. Let's see another example. हम उसको कैसे कहते हैं? Exhaustion, right? पर इसकी सही pronunciation क्या है? Exhaustion. 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 And those students जो पूछते हैं सर ये British pronunciation है या American pronunciation है, we teach British pronunciation because we are born and brought up in British English. जितने भी हमारे students हैं online, mostly चाहे जितने भी हमारे students हैं, चाहे वो online हो या जो हमारे center में coaching लेते हैं, they are all from all over the world, चाहे वो Canada से हो, Australia से हो, आपके England के भी students हैं अब हमारे जो PT की preparation कर रहे हैं, IELTS की preparation कर रहे हैं online, India से तो है ही हैं और India में South India से हैं, मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, नोएडा एनसीआर से हैं. All of them are born and brought up in British American English. So this is the reason you have to understand that whatever we teach is in British English. Now another word is suggestion. हम उसको suggestion बोलते हैं, but let's see how to pronounce that word. That word will be Suggestion. 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 So that will be suggestion. So यही आप शायद समझिए, यही minute mistakes हैं. अब अगर आपको speaking देनी है या read aloud आ गया है PTE में या CELPIP में आपको अपनी speaking देनी है और आप बोल रहे हो another suggestion is, वहीं पे आपके pronunciation के marks deduct हो जाते हैं. You have to say is another suggestion is this. The same thing हम इसको combustion बोलते हैं but it will be या combustion बोलते हैं but it will be Combustion. 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 Combustion, right? So again it will be your sound ending in chan, so you have to remember that जब भी आपके STION आते हैं they will end in chan. Let's see another example which is very important. यही example विनीता मैम ने अपनी IELTS की वीडियो में दिया था. Let's see, इसको हम caution कहते हैं, caution कहते हैं, but it will be Question. Question. it will be question. So यहाँ पे again chan sound आती है. So always remember this rule. If you want to score 79 plus, 65 plus, 7 bands in IELTS, 7 plus in IELTS or CLB 9 or more in CELPIP, so you have to make sure that आप इन minute चीज़ों का ध्यान रखो because pronunciation is very important in speaking. So this is what I wanted to tell you. Always remember that. अगर आपको हम जो strategies या techniques समझा रहे हैं, जैसे हमने आपको ये example समझाया pronunciation का, अगर आप उसको नहीं follow करोगे या modify करोगे, you are not going to win this trophy. And what is this trophy? This is your 8 plus bands, 7 plus bands or 6 plus bands in IELTS, PT, CELPIP. बट अगर आप हमारी टेक्निक्स को याद रखोगे, सही ढंग से इम्प्लीमेंट करोगे, फॉलो करोगे, यू आर श्योरली गोइंग टू विन दिस ट्रॉफी. एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है आपने आज ये रूल समझ लिया आप सीधा पेपर में इम्प्लीमेंट कर लोगे. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट. एंड मार्वल एजुकेशन प्रोवाइड्स यू अ कंप्लीट इंटेलिजेंट प्रैक्टिस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर चाहे वो मार्वल आइल्स का सॉफ्टवेयर हो, मार्वल CELPIP का सॉफ्टवेयर हो या मार्वल PTE का सॉफ्टवेयर हो. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. दिस इज आवर नंबर विच यू कैन सी 8699121121. You can WhatsApp us if you have any questions or doubts regarding your CELPIP, IELTS, PT, and we will love to answer those. And do not forget to subscribe to our channel ताकि जैसे ही हम इतनी important videos upload करें, to know which is important for you to practice, which is important for you to implement, so that you can achieve your target score. आपको सबसे पहले पता चले. And we keep uploading videos almost on a daily basis. So subscribe to our channel and share it with your friends, family, so that उनको भी ये नॉलेज हो. इंग्लिश की सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप CELPIP, PT, IELTS राइट डाउन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट इट विल इम्प्रूव योर बेसिक इंग्लिश ऑल्सो. वी गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स.